we plan this in a different manner. कल हमने एक सिचुएशन देखी थी जिसमें जो टर्निंग था, we saw that one arm of the triangle was r tan theta by 2. Is that correct? Remember that? Mudit? Yes, sir. So that concept is clear, that AB is equal to BC is equal to r tan theta by 2? Yes, sir. Okay, good. So we will be taking use, or we'll be making use of that particular thing. We'll go to the board to plan the turn around an imaginary object. Remember, the first plan that we did around a radar conspicuous object, what are the steps to be followed? What are the steps that we followed? Number one, identify the object. And keeping that object as the center, draw an arc of the circle after deciding the radius. Radius decide करने के लिए क्या? बहुत सारे factors आपको दिमाग में रखने हैं. The maneuverability of the vessel, that is the length, breadth, type of vessel, whether full form or fine form, loading condition, list, trim, etc., etc. So many conditions make the or affect the turning of the circle. Shallow water, hazards, sea room available, all that put together. Everything considered, you have to decide the radius as to how much radius should be kept. So you have drawn an arc of the radius r, keeping the center O as the object. Then tangential to the arc, you draw the initial and final course. So that's what we did in the first type of planning. In the second planning, we proceed the other way around. हम पहले अपना पैसेज देख करके टर्न बना लेते हैं, वे पॉइंट्स डाल लेते हैं, इनिशियल फाइनल कोर्स डाल लेते हैं. We'll go to the board to see how we plan the turn around an imaginary object. Okay, board visible? Board visible? Yes, sir. हाँ तो बोलो ना. All right. So here the first step is that we have the chart, seeing all the place, the sea room available and all that. We draw the initial and final course first of all. Let us say this is AB and BC, initial and final course that we have drawn already. तो ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, ये पॉइंट हो गया हमारा. बट ये आर्क कैसे डालें? आर्क के लिए हमें सेंटर चाहिए यहाँ पे, वो कुछ देखने के लिए है नहीं. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस सेंटर, ताकि हम उस सेंटर पे रख करके और आर्क ड्रॉ कर सके. So what we do? We first decide the radius. After drawing the initial and final course, we decide the radius, and on the initial and final course, we cut 2 points in such a way that it is, in this case, PB is equal to BQ is equal to r tan theta by 2. We have the theta, we have decided the radius. So in this, we are cutting this as r tan theta by 2. This also r tan theta by 2. Now from point P and Q, we take the compass and radius के बराबर का एक आर्क कट करते हैं, और यहाँ से भी रेडियस के बराबर एक आर्क कट करते हैं. This point is the center O. अब कंपास को उल्टा रख करके and then we draw the radius arc. सर ये
पी और क्यू की पोजीशन फिर से बता दिए, कैसे लेंगे? पी और क्यू का पोजीशन इज बी से हम एक ये कट करेंगे और ये कट करेंगे. द वैल्यू ऑफ दिस इज r tan theta by 2. Let us say for example theta is let us say 70 degrees. हेडफोन्स लगा ले. तो सारा दिन वीडियो देखती है ना हेडफोन्स पे. All right. Let us say this is 70 degrees angle of alteration. The radius you have decided is let us say 2 miles. Then what is the value of r tan theta by 2? Tan 35 degrees multiplied by 2. करके बताओ जल्दी फटाफट. वन पॉइंट 40. 1 second, 1 second. 1.40 सर. यस क्या बोले? 1.40. 1.40 मतलब 1.40 माइल के बराबर का डिस्टेंस कट करते हैं. यहाँ भी 1.4 माइल का डिस्टेंस कट करते हैं. यहाँ से 1.4 माइल 1.4 कैसे करेंगे? आर यस. कैसे assume करें? आर कैसे लेंगे? आर तो तुमने डिसाइड किया ना कल का फैक्टर्स कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर्स फॉर डिसाइडिंग रेडियस. कल वाला पॉइंट पढ़ो. यस सर, ठीक है सर. याद है? यस सर. length hazard, type of vessel, length of the vessel, breadth of the vessel, rudder effectiveness, trim, list, loading condition सबको देख के आर डिसाइड करते हैं. आप करते हैं डिसाइड. ओके सर. ओके. सो आर डिसाइड कर लिया तो थीटा आपके पास है, आर है तो आर tan थीटा बाई 2 कर सकते हैं. जिसमें अभी अगर ये 70 डिग्री था और आर 2 माइल है तो अभी आपने कैलकुलेट किया 1.4 माइल्स का डिस्टेंस. r tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 1.4 माइल. अब इस 1.4 माइल से r के बराबर एक आर्क कट करते हैं. यहां से भी r के बराबर एक आर्क कट करते हैं. नाउ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज O, द सेंटर अराउंड विच यू हैव टू टर्न. दिस इज द इमेजिनरी पॉइंट. अब सेंटर मिल गया तो सेंटर पर रख करके और आर्क खींच देंगे. सो यू हैव द स्ट्रेट कोर्स and you have the arc of a circle for the alteration. Are we good? Understood? एंड सर इसमें डिस्टेंस निकालनी होगी ए बी और बी सी. ए बी और बी सी तो पीछे के तो ए बी और बी सी तो मान लो 300 माइल का ए बी है. 300 माइल से चले आ रहे हो. अब यहां से 250 माइल आगे जाओगे. नहीं समझे? इनिशियल कोर्स है नहीं है. यस सर. तो हो सकता है अगर स्मॉल स्केल चार्ट में देखें तो आप चले आ रहे हो यहाँ से ऐसे चलते हुए ये 250 माइल्स आप चल के आ रहे हो. यहाँ पे आपको ऑल्ट्रेशन करनी है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या नहीं है, आपको यहाँ पे टर्न करना होगा या नहीं. तो ये तो ए बी तो ये है, ये चला जा रहा है. अब यहाँ से आगे निकल जाना है, आपको बहुत लंबा जाना है. तो इसको बीसी को हमने ए बी और बीसी इनिशियल फाइनल कोर्स हो गया. बस वो 5 माइल का भी हो सकता है, 15 माइल का भी हो सकता है, 150 माइल का भी हो सकता है, 200 माइल का भी, कुछ भी हो सकता है. अंडरस्टूड? यस सर. So what we did in second type of planning imaginary point पे, इसके केस में हमने क्या किया? नंबर 1, decide the radius considering what factors? All factors. आपके बुक में दिया हुआ है, आपको नोट्स में भी दिया हुआ है, कल लिखवाया भी था. Decide the radius considering all factors like so and so, so and so, so and so. Number 2, what we did? Draw initial and
final course. Number 3, what we did on the initial and final course, cut a length such that you can have any name, A, B, B, C, P, Q, R, M, N, O, whatever. So we are writing like AB is equal to BC is equal to R tan theta by 2. नंबर 4 में क्या किया था बताओ? सर इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आर का रेड आर्क लेके इमेजिनरी पॉइंट ओ को निकाला था. Okay. So next one is on from A and C. Draw an arc of length is equal to R. ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया. दो जगह से R हम कट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया. Take out the notes. Take out the notes that I have sent you. Question answer. When out, please let me know. मिल गया केशव? सर कर रहा ओपन नेट. Okay, 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 okay. यस सर कर लिया. Okay, क्वेश्चन निकालो जिसमें you have to make the plan of the turn around imaginary point. क्वेश्चन निकालिए. यस सर. Read the answer. Sir, planning the turn around an imaginary point, decide on the radius r of the turn considering the factors such as type of the ship, length overall, breadth, list, trim, displacement, shallow water effect, sea room available, navigation hazards, effectiveness of the rudder and external factors, etc. So Now पहला draw point the yes sir. So second. second point, draw the initial AB and final course BC and the alteration being in theta degrees. Okay. On AB and BC, cut a distance of r tan theta by 2 such that PB is equal to BQ is equal to r tan theta by 2. Okay. You are able to imagine what we are doing? Yes, sir. Yes, sir. Go ahead. From points P and Q, cut an arc of radius r such that they intersect at point O. Keeping O as center, draw an arc of radius r such that the arc touches AB and BC tangentially at points P and Q. Clear?
So what you have done is that you have decided radius r हो गया. दूसरे पॉइंट में आपने कहा कि ड्रॉ इनिशियल एंड फाइनल कोर्स ए बी एंड बी सी. तीसरे पॉइंट में आपने कहा कि on AB and BC cut 2 points P and Q such that PB is equal to BQ is equal to R tan theta by 2. ठीक है? This is the third point. Yes, sir. Fourth point says that from P and Q cut 2 arcs such that they intersect at point O. Correct? Read the Yes. sentence. Point number 4, read. From points P and Q, cut an arc of radius r such that they intersect at point O. ठीक है, तो यहाँ से आपने r डिस्टेंस के बराबर एक आर्क कट किया, यहाँ से भी r के बराबर कट किया, दे इंटरसेक्ट एट O. इज दैट ओके? Yes, sir. नेक्स्ट. Keeping O as center, draw an arc of radius r such that the arc touches AB and BC tangentially at points P and Q. तो ए बी बी सी ये है और यहाँ को आप सेंटर रख के आर्क कट करते हैं such that it is touching the AB and BC at point P and Q tangentially. Since यहाँ से यहाँ का r डिस्टेंस था, तो यहाँ से यहाँ भी r डिस्टेंस होगा. So, lo, we have the plan ready. We have made the initial course. We have made the arc of a circle for turning the vessel, and we have the plan ready. Are we good? Yes, sir. So, the planning part is done. Next is what? The next step is what? In passage execution? Execution. So next is execution. Plan is ready. Either it is around object or imaginary point. दो तरीके का सिचुएशन हो सकता है जो हमने प्लान कर लिया है ऑलरेडी. जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो दिस मे ऑल्सो बी two types of execution. Turning with constant radius. Turning with constant radius. Next one, turning with constant ROT. दो तरीके के टर्न हो सकते हैं. हमारा प्लान जो था वो या तो रडार ऑब्जेक्ट वाला होगा या इमेजिनरी पॉइंट होगा. अब इमेजिनरी पॉइंट में मैं चाहूं तो दो तरीके का टर्न एग्जीक्यूट कर सकता हूं, या रडार ऑब्जेक्ट है तो भी दो तरीके का टर्न एग्जीक्यूट कर सकता हूं. Understood? Is the meaning loud and clear? What we are talking about? Yes, sir. हमने डिसाइड कर लिया कि हम हरिद्वार जाएंगे. अब मैं बस से भी जा सकता हूँ, कार से भी जा सकता हूँ. इट इज लाइक दैट. हमने डिसाइड कर लिया, हमने प्लान कर लिया एक सिचुएशन के लिए. अब मैं आइदर execute in this manner or execute in this manner, or I have planned around imaginary point. I can execute like this or like this. So execution first with the constant radius.
turning or executing the turn with constant radius. We have our plan. Now let us, for example, हम इसको देखते हैं when there is a radar object. हमारा प्लान जो था वो इसके अराउंड था, रडार ऑब्जेक्ट के अराउंड. अब मैं टर्न जो एग्जीक्यूट कर रहा हूं वो कांस्टेंट रेडियस. सो वी ऑलरेडी हैव द प्लान, द रडार ऑब्जेक्ट हियर, and we have this turn where there is radius r. We have AB, we have BC, initial and final course. When the vessel is here, let us say the speed is 14 knots. The radius is 2 miles. So when I give the rudder at this place somewhere before, what do you think should be the ROT that I should attain at this place? What should be the ROT when I reach here? So 7 degree per minute. Very good. ROT is equal to V by R is equal to 14 by 2 is equal to 7 degrees per minute. So this is the ROT. If I keep the ROT at 7 degrees, the vessel is supposed to be going like this, because every minute it is turning 7 degrees, 7 degrees. So it is going to be like this. But actually what happens, the vessel's speed drops when turning. When the vessel is turning, there is water pressure coming from the side and it keeps on slowing down the vessel. So entry speed was 14 knots. Once you are here, maybe it is 10 knots. There is almost 25% of drop in 90 degrees of turn. So when the vessel is turning, the speed will drop. Approximately, general rule, 25% speed drop in turning the vessel by 90 degrees. So the radius was 2 miles, the speed was 14 knots, and the ROT was 7 degrees. But what is happening? The speed is becoming like this, and like this. So going by this situation, if ROT was so and so, so R is equal to V by ROT. Is that correct or not? Yes, sir. Okay. So ROT is 2 miles that we require. We are turning with constant Radius. radius. That means the radius has to be 2 miles. When it was 14 knots, ROT was 7 degrees. Very good. We are getting this situation. But when the speed is dropping to 13 knots, how much should be the ROT to get 2 miles of radius? 6.5. Very good, 6.5. When the speed is 12 knots, what should be the ROT for getting 2 miles of radius? 6. 6. When the speed goes to 11 knots, we should have 5.5 knots, 5.5 degrees ROT. Correct? Yes. Yes. So
in order to keep the radius constant, what we have to do with the dropping speed of the shape in order to maintain this constant? So Reduce keep reducing. Reduce the ROT. Keep changing the ROT as per the current speed. That means when you are turning, you have to monitor the speed, and for this speed, you have to change the ROT. You continuously monitor the speed of the vessel, now dropping, and accordingly reduce the helm, bring the ROT to less. When it is dropping further, you bring it lesser. So in order to execute the turn with constant radius, what should be changing all the time during the turn? The rate of turn. ROT. Rate of turn. Very good. That is the whole idea about constant radius turn, or constant radial turn also it is said sometimes. So when executing the turn with, हाँ जी बोलिए. Sir, when we reached at the point C, then we have to reduce ROT to 0, or Of course. Now you have to stabilize here straight ना. तो वो इनिशियल पार्ट यहाँ पे है, यहाँ पे आकर के आप कमांड ले लेंगे अपने हाथ में, एंड यू विल स्टेबलाइज द वेसल, मिडशिप पे ले आएंगे, आरओटी 0 हो जाएगा, नए कोर्स पे निकल जाएगा. इट इज ओनली Yes, फॉर sir. ड्यूरिंग दिस पार्ट ना, टर्न के पार्ट में. yes, इसके पहले भी आप सीधा आ रहे थे, मिडशिप लेकर के आ रहे थे, यहाँ पे रडर दिया, यहाँ से टर्न शुरू हुआ, यहाँ पे आकर के टर्न आप देखेंगे कि अब अच्छा ठीक है, अभी 080 पे जाना है, 075 आ चुका है, आप मिडशिप करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे और अगला निकल जाएंगे आगे. अंडरस्टूड? yes, yes, sir. So this is execution of the turn with constant radius. Next one is executing the turn with constant ROT और constant helm भी कहते हैं लोग, but constant ROT हम मान के चलते. अभी हमने देखा that during the turn when we have to maintain the radius constant, this is a tricky job. Tricky in the sense it keeps me involved all the time. उधर स्पीड देखो, इधर कैलकुलेट करके क्वार्टर मास्टर को बोला अच्छा रिड्यूस करो 6.5, अच्छा 5.5, अच्छा 5 डिग्रीज, बार बार करना पड़ता है. Then at that moment I have other things to watch for. Shallow water, उधर इको साउंड देखना, उधर चार्ट देखना, उधर जीपीएस देखना है. So it is not so practical, although it is okay, sometimes it is required, but this is a tedious method of executing the turn. Maybe it is required sometimes, so we'll have to do it. But do we have some other easier method? By the name it looks, we have एक ROT दे दो, constant चलते रहो, यहाँ से चलो वहां तक चले जाओ, कोई चेंज नहीं करना. ROT जितना कर दिया दे दिया, एक बार वो कर दिया. So in this case, we have already seen that this vessel, when she is turning, she was at 14 knots, then 13, then 12, then 11, and so and so. The radius was R. If we had to turn with constant radius, we were changing ROT with a dropping speed. In constant ROT turn, ROT is calculated on the average speed during turn divided by the radius. So during this turn, what is the average speed? The 12 knots. 12 knots. So what we have is 14,
plus 13 plus 12 plus 11 plus 10 divided by number of entries 1, 2, 3, 4, 5. So that must be coming to 12 knots. So ROT is calculated. If we want to turn with constant ROT, we have to take not the individual speed, instantaneous speed, but take the average speed of the turn and divide it by the radius. So in this case, it is 12 knots divided by 2 miles मान लीजिए. So how much is the radius? ROT? 6 degrees per minute. Is that okay? Yes, sir. Now, very important thing to note. To maintain 2 miles of radius for 14 knots of speed, how much of ROT should have been? 7. 7. Required था 7 degrees, लेकिन आप दे कितना रहे हैं? 6. यहाँ पे 2 माइल के रेडियस के लिए ROT required was how much? 6.5. But how much you are giving? 6. यहाँ पे required ROT was 6 and you are giving 6. The required ROT at this place was how much? 5.5. But how much you are giving? 6. 6. Now, understand this very clearly. 7 degrees is required, but you are turning less. So where will the ship go? Will she be on the track, or she will go inside the track, or she will go outside the track? आपको घूमना है 7 डिग्री. Outside the track, sir. Outside the track. Very good. So she will start going out of the turn. Why? Because what you are giving is less than the required ROT. Still it is required ROT is 6.5, but you are giving 6. So she will continue to go out. But then as you are coming to this place, required ROT and the given ROT, are they matching? Yes, sir. That means this place, he will try to hold the radius. Yes, sir. जितनी required उतना दे रहे हैं, तो she will try to hold the radius. Then how much is required here? 5.5. Less than But how much you are giving? 6. मतलब चाहिए था कम, लेकिन आप दे रहे हो ज्यादा. वेसल क्या करेगा? The track पे आने की कोशिश. तो वापस भीतर की तरफ मुड़ेगा. Yes, sir. Yes. And so when you are coming here, you stabilize the ship on the new course. So when the ROT was constant, what was changing? Radius, sir. It was changing during the turn. थोड़ा सा पेट निकल गया इस टर्न का, लेकिन जहां से शुरू किया था वहीं से शुरू किया है, जहां पे खत्म करना था ऑलमोस्ट वहीं पे खत्म किया है. In a large ships, large area, this kind of problem is not too much कि थोड़ा सा बाहर निकल गया तो उतनी रूम नॉर्मली अवेलेबल होती है. So this is a more practical method of making the turn where you are keeping the ROT constant all the time when you are deciding the ROT on the basis of average speed of the ship during the turn. In this case, what happens? The speed keeps on dropping, but you are giving a constant ROT, and that results in changing radius. Remember, in the previous execution, constant radius, what was changing? Sir, Sir, ROT was changing. ROT change कर रहे हैं, constant रख रहे हैं, तो क्या change हो रहा है? The radius.
चेंज हो रहा है. Radius. So this is the main difference between the two. Constant ROT, radius changing. Constant radius, ROT changing. Clear? Clear? Yes, sir. Find out the question where it says execution by means of constant radius and constant ROT. Read the question. Okay, who will read? Shamit, you read. Shamit. Shamit. Ramandeep. नहीं है समित क्लास में. Ramandeep. Yes, sir. Please find the question where it says execution with constant radius and execution of the turn with constant ROT. सर क्वेश्चन सेकंड के पार्ट में कांस्टेंट रेडियल वाला है. ओके, तो सेकंड पार्ट का आंसर रीड करिए. यस सर. थर्ड में है. Assuming that the radius of the turn is 2 miles and the entry speed of the ship is 14 knots, required ROT is equal to 7 degree per minute, or speed is equal to, or radius is equal to speed over ROT is equal to 2. Yes. But as the ship progresses on the turning track, the speed of the ship starts dropping down. Approximately 25% speed drop is observed for an alteration of 90 degree. As you can see from the formula, if the speed reduces, so does the radius. Therefore, in order to maintain the constant radius of 2 miles during the turn, the speed of the ship should be monitored closely and ROT should be adjusted accordingly throughout the turn. Monitoring of a turn. Monitoring of turn can be... No monitoring. Did you understand when you were reading, was the picture going over in your mind? Yes, sir. Is it clear what you are reading? कि बस read कर गए और समझे नहीं. When you are reading, the picture should be clear in your mind. Are you understanding what you are reading, Ramandeep? Yes, sir. Yes, sir, it was Very clear. Very good. So find out some place where you have constant ROT turn. Some question will be there with constant ROT. Yes, sir, third question. Okay, go ahead. Read the Planning question first, then answer. With the help of a neat sketch, explain the planning and turning with constant ROT around a radar conspicuous object. How will you monitor the turn? Answer. Okay. Did you understand the question? Yes, sir. क्या करना है? Sir, ROT को constant रखना है. उसके पहले सर फिर एवरेज स्पीड निकालेंगे. एग्जीक्यूशन बाद में होती है, पहले प्लानिंग होता है ना. यस सर, प्लानिंग करेंगे. प्लानिंग में क्या कह रहा है? कौन सा प्लानिंग है आपके पास अभी? सर हमें ऑब्जेक्ट मिला है तो पहले वो आर्क से सेंटर निकालेंगे. What is the type of plan that you are required to give in this question का आंसर में? ROT constant. ROT constant रखेंगे. That is execution. That is execution, na? Constant ROT. Read the question slowly, one by one. I mean, step by step. Read again. Question. With the help of a neat sketch, explain the planning and turning with constant ROT around a radar conspicuous object.
Then what type of planning we are talking about? Around radar Radar. conspicuous Radar That's object. it. conspicuous. So you have to understand the question, what the question says. So पहला पार्ट है planning the turn around the radar conspicuous object. उसके लिए 4 स्टेप की प्लानिंग थी, वो हमें लिखना होगा. Then we will go into execution. अब एग्जीक्यूशन कैसा करना है? कांस्टेंट आरओटी का करना है. एवरेज स्पीड से आरओटी निकालेंगे. जो बातें बताई हैं यहाँ पे वही बातें होंगी. अंडरस्टूड? Yes, sir. So break down the question first. क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज मीनिंग टू आस्क. कहना क्या चाहता है ये? So now that we have understood, the planning will be around a radar conspicuous object. The execution will be what? Constant ROT. इसी में constant radius भी हो सकता है. radar object का प्लानिंग हो गया. constant radius भी हो सकता है, constant ROT भी हो सकता है. यहाँ constant ROT पूछा है तो हम बताएंगे. अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि how will you plan the turn around a radar conspicuous object and how will you execute the turn with constant radius? प्लानिंग का वो पार्ट, टर्निंग एग्जीक्यूशन कांस्टेंट रेडियस का पार्ट, कांस्टेंटली चेंजिंग आरओटी. अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, now read the answer. Planning the turn around a radar conspicuous object. Point 1. Identify the radar object on the chart around which to plan the turn. Second, Yes. decide on the radius. Go ahead. Decide on the radius of the turn. सर आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई सर. हाँ कोई बात नहीं, मैंने अभी म्यूट किया अपने वीडियो को. Second Okay, point. ओके. Decide on the radius of the turn considering factors such as type of the ship, LOA, breadth, list stream, displacement, shallow water effect, sea room availability, navigational hazard, effectiveness of rudder, and external factor, etc. Keeping the radar object as the center, draw an arc of radius r. Draw initial AB and final course BC, passing tangentially to the arc at the points P and Q respectively. The Every alteration being sentence that you are reading, you are making taking an action in your mind. हर सेंटेंस के साथ आपके दिमाग में एक एक्शन होना चाहिए. अच्छा मैंने ये किया अभी पेपर पे. अंडरस्टूड? yes, Every sentence के साथ you are going to make that action in your mind. पेपर में बाद में करेंगे, प्रैक्टिस में, बट अभी जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे दिमाग में वो चीज करते भी जा रहे हैं. ठीक है? yes, sir. Okay, go ahead. The alteration being theta in degrees. Execution of constant ROT turn. We know that for achieving a controlled turn, we can calculate the ROT and refer to ROTI for the monitoring of the same. The rate of turn is calculated by the formula ROT is equal to ship speed over radius of turn. But we know also, as the ship progresses on the turning track, the speed of the ship starts dropping down. Approximately 25% speed drop is observed for an alteration of 90 degree. In case of constant ROT, the average speed of the ship during the turn is taken for calculation of ROT. That is, ROT is equal to average speed divided by radius. The average speed during the turn is an approximation and should be carefully estimated. Let us assume that the radius of the turn is 2 miles and the entry of the speed of the ship is 14 knots. But the speed progressively keeps on reducing to 13, 12, 11, 10 and so on, as shown in the diagram. The required ROT is then ROT is equal to 14 plus 10 divided by 2 and further divided by 2 is equal to 6 degree per minute. As can be seen, initially the ship swings out of the planned turn because ROT is less than required ROT. During the middle phase of the turn, where the speed is about 12 knots,
the ship begins to maintain the radius as required and given ROT are same. In later part of the turn, the ship starts swinging in because the ROT becomes more than the required ROT for lesser speeds. The ship approximately joins the final course at the planned track. Done? Yes sir, अब monitoring रह गया. मॉनिटरिंग तो अभी हमने किया नहीं ना है. हाँ जी सर. हाँ, मॉनिटरिंग नहीं किया. नाउ मॉनिटरिंग. One second, let me set up the camera. And let me also get a glass of water. I'm feeling. सर थोड़ा टाइम हो गया सर, कल करेंगे. Yes sir, दिख रहा है बोर्ड. Okay. So now the third phase is monitoring. Monitoring may be required when you have a radar object, when you are turning around radar object, then also you have to monitor, or you may be turning above an imaginary point. Correct? This concept clear? जो एग्जीक्यूशन सर जो एग्जीक्यूशन किया वो अभी रडार ऑब्जेक्ट के लिए किया था ना, जो दोनों थे अपने. एग्जीक्यूशन के लिए हम या तो रडार ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं. हमने क्या कहा कि प्लान हो सकता है एक रडार ऑब्जेक्ट के आसपास, दूसरा इमेजिनरी पॉइंट के आसपास. करेक्ट? यस सर. अगर रडार ऑब्जेक्ट है तो इसमें हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं कांस्टेंट आरओटी, सॉरी कांस्टेंट रेडियस एंड कांस्टेंट आरओटी, दोनों कर सकते हैं. और इसमें भी हम दोनों कर सकते हैं, कांस्टेंट रेडियस भी कर सकते हैं और कांस्टेंट आरओटी भी कर सकते हैं. ओके सर. तो अभी जो क्वेश्चन था वो ये वाला था कि रडार ऑब्जेक्ट है, और एक क्वेश्चन में हमने देखा कांस्टेंट रेडियस से आप टर्न कर रहे थे, दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा कांस्टेंट आरओटी से टर्न कर रहे थे. करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों देखिए, दोनों में रडार ऑब्जेक्ट है मेरे ख्याल से. नहीं, ऑब्जेक्ट है ये सर, रडार ऑब्जेक्ट है दोनों में. रडार ऑब्जेक्ट. तो रडार ऑब्जेक्ट रहेगा तो एग्जीक्यूशन इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट मतलब कि रडार ऑब्जेक्ट में भी ये दोनों कर सकते हैं, इमेजिनरी पॉइंट में भी ये दोनों कर सकते हैं. यस सर. अंडरस्टूड? यस सर. ओके. So either radar object is there, then also we have to monitor. When imaginary point, then also we have to monitor. So case number 1, when we have radar object, इस केस में कैसे करेंगे? तो हमारे पास प्लान ये है, रडार ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रडार में दिखता है, दिस इज द टर्न. So monitoring can be done, number 1, by VRM, number 2 by EBL, number 3 by visual bearing, how is that? ये हम कैसे कर रहे हैं? तो हमारे शिप का पोजीशन जो है नॉर्मली एक प्लस साइन से दिखाता है. रडार में हमारी पोजीशन प्लस साइन पे होती है. हमने एक बीआरएम डाल दिया इसमें रेडियस के बराबर. इसको छोटे में करके बनाते हैं, समझना आसान होगा. विजुलाइज करना बहुत बड़ा बन गया, इसको थोड़ा छोटा करके बनाते हैं.
So our ship is here. अभी टर्न पे नहीं पहुंची है, यहाँ पे पहुंचने वाले हैं. We have to monitor the turn when we are watching this. So what we have to do is create a VRM of radius r. When the ship is here, the VRM will be like this or not? सर ये थोड़ा Yes, फिर से sir. थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था. ओके, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं रडार ऑब्जेक्ट में. प्लान तो हो चुका, मॉनिटर कर रहे हैं. वी आर टर्निंग द रेडियस, आई मीन टर्निंग द, monitoring the turn when there is a radar object there. So the methods that we can use is by VRM we can monitor the turn, with EBL we can monitor the turn, or by visual bearing we can monitor the turn. Now what I said, first method, monitoring the turn by VRM, what we do, we make the VRM like this with a radius of r. तो हमारी जहाज का पोजीशन यहाँ पे है, हम यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, रडार में देख रहे हैं, VRM ऐसा बना हुआ है. जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो हमारा साथ में VRM भी ऐसे पहुंचेगा या नहीं? Yes, sir. When we are at this point, our VRM will be like this, correct? Yes, sir. If we are at the right place, the radar object should be just about the VRM. Is that correct or not? Yes, sir. Why? Because this VRM is radius. अगर रेडियस के बराबर यहाँ पे है, ये टच कर रहा है, मतलब हाउ मच डिस्टेंस अवे वी आर? सर आर के बराबर. जब हम यहाँ पे होंगे, आरओटी वगैरह दे दिया हमने, जो आरओटी है उसके हिसाब से चल रहे हैं. जब यहाँ पे होंगे तो VRM ऐसा होएगा या नहीं? Yes, sir. यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? R. When we are at this place, VRM will be like this or not? Yes, sir. Yes, How much we are away? R. That means when we are monitoring the turn with VRM, the radar object should be always at the rim of the circumference of the VRM. Is that correct? If we observe, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा रडार ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है, हमारे VRM के भीतर आ रहा है, मतलब क्या हुआ? सर रेट ऑफ टर्न ज्यादा है. रेट ऑफ टर्न ज्यादा है, मतलब जहाज यहाँ पे है, रेडियस ये आर है हमारा, हम ज्यादा मुड़ चुके हैं, इसलिए हम इसके नजदीक चले गए. अगर हमने देखा कि हमारा रडार ऑब्जेक्ट का, सॉरी, रडार का VRM ऐसे जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? मतलब हम यहाँ पे बाहर निकल गए हैं, बाहर की तरफ निकल गए हैं, रेडियस ये था, हम इससे दूर हो गए, रेडियस से ज्यादा दूर हो गए. That means we are away from out of that turn, on the port of the turn here. So during the turn and monitoring by VRM, the radar object should always be maintained at the VRM. the circumference of the VRM. If that is there, that means we are always turning properly. yes, sir. सर सीधे Understood? उठा के मार्कर को वहीं रख दें, फिक्स पॉइंट पे ही रख दें तो पूरी आर्क मिल जाएगी. एकदम सही बात, एकदम बहुत स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, एंड दैट राइट थिंग. इट इज पॉसिबल इन द मॉडर्न रडार्स कि हम ऑफसेट कर सकते हैं VRM सेंटर को, जहाज हमारी वहीं रह जाएगी,
तो ये चौथा पॉइंट होता. यस, गुरपिंदर, claps for him. This is a very good point which I would have mentioned as the fourth point, that in modern radars this facility is available that we offset the VRM center. तो हम ऑफसेट करेंगे, रडार ऑब्जेक्ट के ऊपर रख देंगे तो हमारे पास सरकमफरेंस मिल जाएगा. I have to maintain my position on the circumference. So that is also possible, very much possible. Well done, good point, very good point. All right. Next one is by EBL. When we are here at this point, we are on this track. सर EBL का नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं. बस 2 मिनट. What should be the relative bearing of this radar object at this place? The vessel is here. What should be the relative bearing of this? 90 degree. अगर हम यहाँ पे हैं और सही इसी रास्ते पे हैं, how much should be the bearing? 90 degree to the course. Very good. If we are here, what should be the bearing of this? The same 90 degree. 90 degree. That means if the object is always at 90 degree, that means we are following this track. अगर हम यहाँ पे चल रहे हैं और EBL हमारा कहता है कि this is going like this, मतलब radar object is coming inside the turn. ये जो हमारा 90 डिग्री का EBL है, ये इसके भीतर आ चुका है. Radar object is in this area. That means it is less than 90 degree. What is the situation? The rate of turn ज्यादा हो गया. Rate of turn ज्यादा, हम इधर को मुड़ चुके हैं और इसलिए ये कम हो रहा है. अगर हम बाहर जा रहे होते टर्न से, if we are going out of the turn, then it will become more than 90 degrees. Is that correct? Yes, sir. If we are turning inside, तो इसका बेयरिंग कम हो जाएगा. अगर हम बाहर की तरफ जा रहे हैं तो इसका बेयरिंग ज्यादा हो जाएगा. बट अगर हम ये एकदम 90 डिग्री पे है, then we are on Constant rate of turn. constant radius पे टर्न कर रहे हैं. We are maintaining the radius. So But sir, the time is up. हाँ बोलो. बट सर बार बार EBL थोड़ी ना चेंज करते रहेंगे सर. वो तो फिक्स होता है, वो तो चेंज हमें नहीं करना. हमें तो देखना है कि ये जैसे भीतर आने लगी, अगर रडार ऑब्जेक्ट मेरे 90 डिग्री EBL से भीतर को आ रहा है, मतलब कि मैं भीतर मुड़ रहा हूँ, ROT कम करो जी, ROT कम करो. अगर देखा कि वो बाहर जा रहा है, 90 से पीछे की तरफ जा रहा है, ROT बढ़ाओ. तो वी हैव टू जस्ट मेंटेन इट एट 90 डिग्री. और जैसे आगे पीछे होती है उसके हिसाब से ROT चेंज करेंगे अपना, ताकि वो 90 डिग्री पे रहे. ठीक है ना? ओके सर. क्या कहते हो? ठीक है, नहीं समझ में आया? अगले क्लास में डिस्कस करेंगे. यस सर. ओके सर. थैंक यू सर. क्लास चलो, बाय बाय, टेक केयर. Thank you. चलो, साइनिंग ऑफ, बाय बाय. Go for lunch. Bye bye, thank you.